If you have any doubt at any point in solution of question number 1, all of you must say to me about your doubt. I will solve your problem. Worksheet 1 and 2 both are fully related with the formula of simple interest. With the help of simple interest, all of you become able to require compound interest of a certain given question. सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला को यूज करते हुए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का एवल्यूएशन कर सकते हैं, जैसा कि हमने बताया है। अदरवाइज इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करेंगे हम लोग वर्कशीट 3 में। फिर फार्मूला इज ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 होल पावर n। फिर ए स्टैंड्स फॉर अमाउंट, पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, आर स्टैंड्स फॉर 8%, T stands for time taken, and so on. After that, after evaluating the required amount, we become able to evaluate the required compound interest by using the formula CI is equal to amount minus principal. Compound interest is equal to amount minus principal. Have any doubt in it? किसी बच्चे को कई कुछ डाउट्स है? फिर से बताऊंगा। बच्चे सारे लिखेंगे होमवर्क में वर्कशीट 1 विथ एग्जाम्पल्स, वर्कशीट 1 विथ एग्जाम्पल्स और वर्कशीट 2 का सारा क्वेश्चंस पढ़कर रखेंगे। अगर हो सके तो वर्कशीट 2 का क्वेश्चन बनाकर रखेंगे, अगर नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करें। कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। Also you have to try to solve the questions of worksheet 2 also. If you become unable to solve the question of worksheet 2, then I will solve, after teaching, I will solve each and every question of worksheet 2 in which you have some doubt. Of course, there is no doubt in it. Okay? मीटिंग ओवर करें बेटा? Okay. रब कर दे बेटा। सारे बच्चे नोट कर लिए हैं? हैव एनी डाउट इन इट? इसको बिटा दे बेटा। ठीक है, ओके। For third year, for the third year, we have simple interest is equal to PRT divided by 100. This is equal to 31,360 into 12 into 1 by 100. 0 0 is being cancelled. This is equal to 3763.20.
This one is your interest. Simple interest at the end of third year become equal to rupees 3,763.20. Hence amount A is equal to P plus I. P plus I, this is equal to 31,360 plus 3,763.20. 0.20, this one is 3, 6 plus 3, 12, 10 plus 1, 11, 5, 35,123.20. This is your amount. Finally, your amount become equal to 35,123.20. This is your final amount. Finally, we become able to evaluate the required compound interest on that money, यानी on 25,000. Hence CIE यहाँ लिख देते हैं बेटा. Therefore CIE is equal to amount minus principal. CIE is equal to amount minus principal 35,123.20 minus 25,000. This is equal to 10,123.20. It is your answer. 10,123.20 is the right answer. सारे बच्चे इसका आंसर लिखेंगे. Have any doubt in it? सारे बच्चे इसको नोट करेंगे. फाइनली योर कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम इक्वल टू रुपीज 10,123.20. रुपीज 10,123 and 20 पैसे. It is your answer. Have any doubt in it? With the help of this way, all of you become able to evaluate the required compound interest. Your worksheet 1 and worksheet 2 is related with worksheet 1 and good morning children. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रोटेशनल सिमेट्री. अब rotational symmetry is being finished in our previous class. Today I am going to teach you compound interest. What is meaning of compound interest? All of you are fully known about simple interest in your previous class. Compound interest is different with respect to सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है. जैसे सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने बैंक से 100 रुपया लिया तो बैंक 100 रुपीज़ का ईयरली इंटरेस्ट काउंट करती है. लेकिन वही कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर 100 रुपीज़ हम लोगों ने बैंक से लिया है, अब बैंक कह रही है कि नहीं है हम हर एक 3 महीने पर इंटरेस्ट काउंट करेंगे. यानी इफ इंटरेस्ट इज बीइंग एडेड क्वार्टरली देन इंटरेस्ट मस्ट बी evaluated आफ्टर 3 months. दैट इज कॉल्ड क्वार्टरली एडिशन. तो 3 महीने पर मान लेते हैं कि बैंक 10% सूद लेती है, 10% इंटरेस्ट लेती है, तो 3 महीने पर 10% हो जाएगा 10 रुपीज़. यानी 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट हो जाएगा 10 रुपीज़. यानी जो भी कस्टमर बैंक से 100 रुपये लिए हैं उनको पे करना पड़ेगा 110 रुपीज़. अगर फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए उन्होंने नहीं जमा किया पैसा तो फिर अब इंटरेस्ट काउंट होगा 110 पर, न कि 100 पर. 110 का हो जाएगा 10% ₹11. यानी 6 महीने के बाद
वो अमाउंट हो जाएगा 110 + 11 121। बैंक से लिए हैं 100 रुपया और बैंक प्रोवाइड कर रही है 121 रुपया, कह रही है कि इंटरेस्ट हो गया 21 रुपया। अब कस्टमर को देना पड़ेगा 121, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से, और किसी भी कंडीशन में कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा ज़्यादा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट इन एनी केस। इन योर क्लास फर्स्ट 2 worksheet related with evaluation of compound interest and amount by using the formula of simple interest, where simple interest SI is equal to P into R into T divided by 100. Okay? On the basis of this one, we become able to say the same, that we can evaluate the required compound interest as follows. How we become able to evaluate it, इसको हम लोग देखेंगे। Let principal be P, rate of interest be R% per annum, and time taken is equal to T years. Then simple interest is equal to PRT by 100. This must be equal to, therefore P is equal to SI into 100 by R into T. R is equal to SI into 100 by P into T, as well as T is equal to SI into 100 by P into R. With the help of a formula, simple interest is equal to PRT by 100, we become able to evaluate the value of P, R and T respectively as follows. P is equal to SI into 100 by R into T, R is equal to SI into 100 by P into T, and T is equal to SI into 100 by P into R. Okay? After evaluating simple interest, we become able to evaluate the required amount, where amount A is equal to principal plus interest. Amount, this is your first formula. Second formula is amount A is equal to principal plus I, interest. This A stands for amount, P stands for principal, and I stands for interest. अब हम लोग जो भी एवल्यूएट करेंगे अमाउंट at the end of first year, that amount become principal for the beginning of second year. इस बार फिर 1 year का एवल्यूएशन करेंगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का। आफ्टर एवल्यूएटिंग द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल with time period 1 year with a certain rate of interest, where rate of interest is in per annum, PA means per annum, we become able to evaluate the required amount at the end of the second year, and that amount at the end of the second year
become principal for the beginning of third year. Similarly, we become able to evaluate the required compound interest at the end of 2 years, at the end of 3 years, and so on. ये पहला तरीका हुआ. दूसरा मेथड है बेटा, सारे बच्चे इसको नोट करेंगे. हैव एनी डाउट इन इट? नोट इट. सारे बच्चे इसको नोट करेंगे. सेकेंड मेथड इज to evaluate the required compound interest that method is formula based method. With the help of a certain given formula all of you become able to evaluate the required compound interest by using the formula A is equal to P into 1 plus R by 100 whole raised to the power n, where A stands for amount, P stands for principal, N stands for required time taken, and R stands for required rate percent. If your compound interest is added quarterly, then rate is being divided by 4 and time is being multiplied by 4. In case of quarterly addition or record, rate is divided by 4 and time is being multiplied by 4. As well as if your compound interest is being added half yearly, then rate is being divided by 2 and time is being multiplied by 2. As well as for 1 year, your rate and time will be usual. For 9 months, you have to convert the required time as in terms of 9 by 12 into 9 by 12 into what? 12 in year. अगर क्वार्टरली में काउंट करें तो हो जाएगा 9 by 12 into 12. This 9 months means 9 by 12 year. 9 months means 9 by 12 year, यानी 3 by 4 year. If your compound interest record quarterly, then it will be equal to 9 by 12 into 4, 36 by 12, that is 3, यानी 3 quarterly, and so on. After evaluating the required time taken and rate percent, we become able to evaluate the required compound interest by using the same formula. A is equal to P into 1 plus R by 100 whole raised to the power n. After evaluating the required amount, we become able to evaluate the required compound interest as CI is equal to amount minus principal. Have any doubt in it? इसको रब कर दे बेटा. सारे बच्चे इसको नोट कीजिए. सारे बच्चे इसको नोट करें. सारे बच्चे इसको नोट करें बेटा. Have any doubt in it? कहीं कुछ डाउट्स है फिर बताऊंगा.
have you read out in it? सारे बच्चे इसको नोट करेंगे। Finger दीजिए। नोट कर दिए बेटा? कहीं कुछ डाउट्स है? पूछा वाला ले आई। ठीक बेटा, आई एम गोइंग टू प्रोसीड द नेक्स्ट टॉपिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, वर्कशीट 1, क्वेश्चन नंबर 1। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड इट। बस हाउ वी बिकम एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, सारे बच्चे देखेंगे। वर्कशीट 1, क्वेश्चन नंबर 1। वर्कशीट 1, क्वेश्चन नंबर 1। We have P is equal to rupees 25,000, R is equal to 12% per annum, T is equal to 3 years. You have to evaluate the required compound interest by using the formula of simple interest. How we become able to evaluate it, इसको देखेंगे। For the first year, we have sample interest PRT by 100, 25,000, 12 into 1 by 100, that is rupees 3,000. Your sample interest become equal to rupees 3,000. Hence amount A is equal to P plus SI. This must be equal to 25,000 plus 3,000. This is equal to rupees 28,000. This one is your amount. This is your amount at the end of first year, and this amount is valid for principal in the beginning of second year. So for second year we have SI is equal to PRT by 100, 28,000 into 12 into 1 by 100 कैंसिल हो गया. दिस मस्ट बी इक्वल टू ₹3360. Hence amount is equal to P plus SI
This must be equal to 28,000 plus 3,360. This must be equal to rupees 31,360. This one is your amount at the end of second year. This amount at the end of second year become principal for third year. Have you any doubt in it? सारे बच्चे इसको नोट करेंगे बेटा, प्लीज नोट इट। इस तरह से 2 ईयर्स हो 3 ईयर्स हो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लेंगे। 2 ईयर्स में अमाउंट आ गया 31,360। अब देखते हैं कि थर्ड ईयर में कितना आता है। थर्ड ईयर में जितना अमाउंट आएगा दैट इज योर फाइनल अमाउंट, और उस अमाउंट में इनिशियली प्रिंसिपल 25,000 है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन दिस वन बिकम द रिक्वायर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। When compound interest is being added yearly, we have to evaluate the required compound interest at the end of 3 years on principal of rupees 25,000 at the rate of interest 12%. पार्ट वाइज वन ईयर का निकालते जाएंगे, 1 ईयर 1 ईयर देन 1 ईयर। 3 ईयर्स का निकालना है तो अगर 2 ईयर्स का निकालना है तो 1 ईयर देन 1 ईयर, बाकी एक ही साल 2 साल का निकाल देंगे, कभी नहीं। पार्ट वाइज ईयरली इवेल्युएट करते हैं। ओके, हैव एनी डाउट इन इट? सारे बच्चे इसको नोट करेंगे। Good morning, children. Good morning, children. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रोटेशनल सिमेट्री। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट?